Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Hanji, beta, we have done till which question in the exercise? 8A. Sir, question number 14. We have done till question number 14. So we have to start with question 15 today. Okay. Yes, sir. So we start with them. So question number 15. Okay. The ages of A and B are in the ratio 8:3. 6 years hence, their ages will be in the ratio 9:5. Find their present ages. A और B दो लोग हैं, उनकी ages का ratio आपको 8:3 given है. So let the age of A be 8x. A की age 8x मान लेंगे and the age of B be 3x. Okay. The ratio is 8:3. 8:3. So 8x और 3x मान लिया दोनों की ages को. Okay. Now after 6 years, A की age हो जाएगी 8x plus 6. This will be age of A after 6 years. And what will be the age of B after 6 years? It will be 3x plus 6. So 6 years के बाद दोनों की ages का ratio. The ratio after 6 years will be 8x plus 6. Ratio 3x plus 6. This will be the ratio. And this new ratio is equal to 9:4. This is given in the question. This will be equal to 9:4. The ratio after 6 years. The ratio of their ages after 6 years will be equal to 9:4. So this is the equation. Clear, all of you? The equation is clear. We have done similar type of questions in linear equations also. Cross multiply. Mm-hmm. 54. So 32x minus 27x is equal to 54 minus 24. 5x is equal to 30. X equals to 6. X की value आ गई 6. Okay. Now with the help of
the value of x. You can find the present ages of both of them. A की age है 8x, so 8 into 6 is equal to 48 years. This is the age of A. Now the age of B is 3x. 3 into 6 is 18 years. So these are the ages of A and B. Go down. Sir, done. Very good. Sir. Sir, done. Okay. Sir, I have also done. Okay. Sir, I have also done. Okay. Sir, I Question 16. The ratio of copper and zinc in an alloy is 9:5. Question 15. Alloy जानते हैं आप? Alloy. Do you know what is an alloy? Yes, sir. Yes. सर वो चीज जो दो मेटल को मिलके बनी हो. Yes, very good. Can you give your answer in English, beta? Dash Bharadwaj. Sir, the thing which is made of two metal. Yes. Very good. So a substance which is made up of two or more than two metals is known as alloy. Substance which is made up of two or more than two substances is known as alloy. More than two or more than two metals. Okay. So here there is an alloy which is made up of zinc and copper. In question number 16. The ratio of zinc and copper is given, which is I think 9:5. 9:5 है? Yes, sir. So in the alloy, the ratio of copper and zinc, the ratio is 9:5 in the alloy. So let the quantity of copper be 9x. Quantity of copper equals to 9x. Similarly, quantity of zinc is equal to 5x. Okay, 9x and 5x. Now, if the weight of copper in the alloy is 48.6 grams, copper का weight आपको given है.
That means 9x is equals to 48.6 grams. ये आपको पहले से ही given है. The weight of Sir? copper is already given 48.6. 9x equals to 48.6. Sir? Sir? Yes. Sir, why we have put x after 9 and 5? बेटा ये तो रेशियो है. अरे यार कैसी बात करते हो यार. रेशियो है 9:5. So quantity of copper 9x मान लेंगे और quantity of zinc 5x मान लेंगे. ठीक है. Okay, sir. स्टार्टिंग से हम करते आ रहे हैं. तो चैप्टर खत्म होने वाला तुम अब पूछ रहे हो. So, sir, it means if we have to find if the quantity is given in the ratio, we have to put x after that. Yes, yes, yes. X equals to 48.66 था ये. Sorry. 6 है ना. 48.6 divided by 9. So if you get 5.4. The value of x is 5.4. Therefore, now you have to find what is the weight of zinc in it. So weight of zinc in the alloy is equal to 5x. That means 5 into 5.4. So this is 27 grams. बस यही करना है. Done. No, sir. Yes, sir. Sir, done. So you have to do the 17th one on your own right now. Do it. It is of the same type. Exactly same question. Do it. Sir, written. Good. Do the 17th one, all of you. Tell me the answer of the 17th one. Sir, answer is 1000 boys. Yes, sir, it's 1000 boys. Very good. Correct answer. Thank you, sir.
Sir, the answer is 1000 boys. Okay. So have you all done 17? Yes, sir. Yes, sir. 18th is also of the same type. You can try 18th one in homework. Okay. 18th you have to try in homework. It is also of the same type. Yes, sir. Okay, sir. 19th करते हैं. Sir, what is the meaning of expenditure? एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, मतलब कितना मनी आपने स्पेंड कर दिया अपनी इनकम में से. ओके, दैट इज नोन एज एक्सपेंडिचर. गॉट इट? द अमाउंट दैट यू हैव स्पेंट. Okay. Sir, in 18th question, we have to divide 2500 by 2 or 11. Divided by 2 because savings is 2x. Savings को 2x मानेंगे. And savings is given 2500, so you will take 2x equals to 2500. You will get x equals to 1250. So with the help of this, you will first find the income. x की वैल्यू से पहले इनकम निकाल लेंगे, and then income minus saving is equal to expenditure. Expenditure कैसे निकलेगा? Income minus saving करके. Okay. Okay, sir. Question number 19. First of all, there is a misprint in the question. सही करिए उसको. A bag contains rupees 750 in the form of 1 rupee. 1 rupee आएगा वहां पर, वो 1 rupee नहीं लिखा है उन्होंने, केवल रुपी लिख दिया. In the form of 1 rupee. In the form of 1 rupee. उसको सही करो, 1 लिख लो वहां पे बेटा. In the form of 1 rupee, comma 50 paise, comma 25 paise coins. Okay. Have you all done the correction? Yes, sir. Yes, sir. So now यहाँ पर कह रहे हैं कि 1 रुपी के कॉइन्स हैं, 50 पैसे के कॉइन्स हैं, 25 पैसे के कॉइन्स हैं. ये सारे कॉइन्स की टोटल वैल्यू ऐड करके जो गिवन है दैट इज रुपीज 750. 750 रुपीज है टोटल. सारे कॉइन्स की अगर वैल्यू ऐड कर ली जाए तो टोटल मनी जो है वो है 750 रुपीज. नाउ द रेशियो ऑफ द कॉइन्स इज गिवन 5:8:4. जो कॉइन्स का रेशियो है 1 रुपी कॉइन्स, 50 पैसा कॉइन्स एंड 25 पैसे कॉइन्स, इनका रेशियो आपको 5:8:4 गिवन है. ओके. फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेशियो क्या गिवन है. 1 रुपी कॉइन्स रेशियो 50 पैसे कॉइन्स ratio 25 paise coins. This is given 5:8:4. Clear? Now let number of 1 rupee coins be 5x. 1 rupee के 5x coins मान लेते हैं because the ratio is 5:8:4. So 1 rupee वाले 5x coins हो गए. Similarly, number of 50 paise coins
be 8x and number of 25 पैसे coins be 4x. ये हमने assume कर लिया. Number of 25 पैसे coins be 4x. Okay. So now अब देखिए जरा एक बात, मुझे मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, यू हैव टू आंसर मी. First of all, you tell me that the period will get over at what time? It is started Sir, at 12:10. okay. Okay. So yeah. So now you tell me that if suppose you have 6 coins, you have 6 coins of 50 paise, then what is the total value of these coins? sir, 3 rupees. पैसे में बताइए. Give your Sir, answer. 300 पैसे. Very good. कैसे निकाला आपने? आपने एक कॉइन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? You will write the value of Sir, 50 into 6. 50 पैसे is the value of one coin. और टोटल कितने coins है मेरे पास? Number of coins कितने थे? 60. 6. आ गया 300 पैसे. टोटल पैसे कितने हुए? 300 पैसे. So how will you find the total पैसे? Sorry, total value of the coins. Multiply. Value of each coin. Value of each coin multiplied by number of coins. एक कॉइन की वैल्यू को नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ऑल द कॉइंस. ओके, यही मैं यहाँ पर यूज करूंगा. द सेम कॉन्सेप्ट आई विल बी यूजिंग हियर. 1 rupee कॉइन को मैं 100 पैसा कॉइन बोल सकता हूँ. कैन आई से दैट 1 rupee कॉइन इज अ 100 पैसा कॉइन? Yes, sir. बोल सकते हैं. तो 100 पैसे इज द वैल्यू ऑफ 1 कॉइन. अगर एक कॉइन है मेरे पास तो उसकी वैल्यू कितनी है? 100 पैसे. और नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? 5x. नंबर ऑफ 1 rupee कॉइन्स कितने हैं मेरे पास? 5x. तो इनटू 5x. ये मैंने क्या निकाल लिया? 1 rupee वाले कॉइन्स की टोटल वैल्यू निकाल ली. क्लियर और नॉट? अभी अभी जैसे मैंने बताया था वैसे निकाला है. वैल्यू ऑफ ईच कॉइन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉइन्स प्लस 50 पैसे कॉइन्स की वैल्यू भी निकाल लेते हैं और ऐड कर देंगे. 50 पैसा वैल्यू ऑफ ईच कॉइन into number of coins. कितने number of coins? 8x plus 25 पैसे coins की बात करते हैं. Value of each coin 25 पैसे and number of coins 4x. So multiplied by 4x. ये हो गई 1 rupee coins की वैल्यू, ये हो गई 50 पैसा coins की वैल्यू, ये हो गई 25 पैसे coins की वैल्यू. सबकी वैल्यू ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल मनी मिल जाएगा. कितना है मेरे पास? Am I right or not? टोटल मनी मेरे पास ये है. ऐसी तो निकालेंगे सारे कॉइन्स की वैल्यू ऐड करके. तो टोटल वैल्यू इज गिवन 750 रुपीज. कितने दी हुई है? 750 रुपीज. 750 रुपीज लिखें या फिर पैसे में लिखें, बात एक ही है. पैसे में क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज एवरीथिंग इज इन पैसा है. मैंने यहाँ पर सारी चीजें पैसों में लिखी है. मैं यहाँ पर भी पैसे में कन्वर्ट कर लेता हूँ. 75000 पैसे में निकाल ली. 75000 पैसे. टोटल वैल्यू मेरे पास कितनी है? दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. 750 रुपीज है मेरे पास टोटल. इन कॉइन्स को ऐड करके टोटल रुपीज कितने हैं? 750 रुपीज और 75,000 पैसे. एक ही बात है. नाउ यू सॉल्व दिस इक्वेशन. 500x प्लस 400x प्लस 100x equals to 75000. 1000x equals to 75000. x equals to 75 आ गया. 1000 डिवाइड में चला जाएगा. तो नंबर ऑफ 1 rupee कॉइन्स कितने हो गए? 1 rupee कॉइन्स कितने? 5x. तो 5 into 75, 375 कॉइन्स. 50 पैसे कॉइन्स
कितने हैं 8x 8 into 75 this means 600 and 25 paise coins is equal to 4 into 75 this is 300 clear आपको नंबर ऑफ पॉइंट बताने थे कितने कितने हाँ जी Sir, we are on same na sir 7C also on 21st question and we are also 19th. 7C have done till question number 21 yes and you are on question number 19 हाँ तो 2 क्वेश्चन आ गए हैं बस बोलो अभी तक we can I think we can do some more questions now right now question number 20 Yes sir. so have you all written this Yes sir. Sir, I have done 20 question. okay 20th is very easy you all can try it simple equation you have to solve in question 20 Sir, the answer is x equals to 2. correct answer in question 20 this is given 4x plus 5 ratio 3x plus 11 3x plus 11 is equal to 13 ratio 17 this is given so first you change both the sides in fraction so this is a very similar type of questions you have done in linear equation 4x plus 5 upon 3x plus 11 इसको पहले मैंने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया दोनों साइड में 13 upon 17 now you simply solve this linear equation cross multiply करिए and solve करिए 17 into 4x plus 5 equals to 13 into 3x plus 11 so 68x plus 85 39x plus 143 68x minus 39x equals to 143 minus 85 29x equals to 58 x equals to 58 upon 29 x equals to 2 and without a Sir, I have also done. very good Sir, Sir, done. the cross multiplication. yes cross multiplication किया है बस सॉल्व करिए okay
Sir, 21 is also very easy. Okay. So 21 and 22 are of same type, but it is different from question number 20. Question 21 is a little different from question 20. So I will have to do it. Can you do the 23rd one first? All of you try the 23rd one. 21, 22 मैं आपको next class में कराऊंगा because it will take a little more time. Not much time is left in the class. Only 2-3 minutes are left. Okay, sir. So can you all try the 23rd one on your own? दो numbers हैं 5:7 ratio. Sir, I have already done. So the ratio is 5:7. आप इन दोनों numbers को 5x 7x मान लीजिए. And the sum of the numbers is 720. So 5x plus 7x equals to 720. Sir, x equals to 60. हाँ जी, very good. करिए. It is a very simple question. Try all of you.